I will stop my screen. You can Hello. just test your screen, share screen. Yeah. Can you hear me, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that's good. That's good. So you want me to share the screen? Yeah, we'll just check whether everything is working fine. Are you able to see my screen, sir? Yes, sir. We are able to see. Yeah, perfect. Okay. So I'll just run through these. I think, yeah, we should be good. Yeah. Yeah, good. Fine, sir. And in addition, like if I'm showing that model, Okay. Okay. so will that also be working along? Yeah. Yes, even your video is seen simultaneously. Okay. That will be seen as a thumbnail. Yeah, that will be seen as a thumbnail. Okay, that should be fine. I'll just, yeah, I'll just do that. So if I just show this, if I just want to show this, you know, just want to change this. How can I go to iPods in this? Sorry, sir. I want to connect my iPod. To This thing, earbuds. I'll have to stop sharing screen first. yes, Yeah. yes. You can stop sharing. Okay. Yeah. Now it's. You can hear me? Yeah. Yes, sir. Okay. So while I'll be speaking, I would like to show this model also along with. Okay. After this. Nah. Yeah, this will be helpful, I think. Okay. 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 Yeah. So maybe this way. Okay. Because that makes learning easier. Okay. Yeah. That should be fine. So we should be good with that. Mr. Hari? Yeah. So is it like I'm the only speaker today? Yeah, you are the only speaker. Mr. Pratik Kishmatra will be there. So he will introduce your this thing. After that, you can start the session. Sure, sir. Sure. I think a couple of minutes are there. That's all. Yeah, a couple of minutes there. So we will start the event at 6:05. We will start the event. That should be. So there is some 15 participants there. So more will joining in another 2 or 3 minutes. Yeah. Yeah. Sure. Hello, Mr. Hari? Yes, sir. Am I audible?
Yeah, you're audible. Little low, but It's low. I think better I'll re-log in from my laptop. It's here yeah, only. you can log in. Because yeah, handling it from mobile becomes a bit difficult. Yeah, So you can log in from laptop itself. I'll log in quickly. Yeah, yeah. Dr. Santhal is there? I think he's traveling. He might join, but then he may not be able to contribute. Oh, Not, okay. I think he's traveling somewhere. That should be fine. So how many people we are expecting? Some 50 odd people? Yeah, usually we have. I mean, yesterday we had anterior segment, so we had around 50 logged in. That's a good number. I think we have around 75 plus registrations, but then few of them are ophthalmologists, so they may not be keen on attending clinical sessions. So, Sure. So these sessions are now available after recording or not yet? Yeah, they provide audio within 3-4 days. So the recordings are provided and the link, YouTube link is shared with the participants. Okay. I don't think I got one, but that's fine. That should be fine. I think Dr. Naresh Kumar is also expressing the same concern. He wants recording. I think last 2 sessions they have already shared. So Dr. Naresh, just check with Ophthall people if your registered email address is correct. So I think they have shared first 2 sessions links, YouTube links with everyone. Okay. You are also doctor, sir? No, I am a practice management consultant. We met during last counseling. I think last online counselor session also we conducted on VR one session. Okay. If I'm not wrong. Good. We'll be just back in a couple of minutes. Sure.
So can we start the session or I will wait another 2 minutes? Yeah, I think let's wait for a couple of minutes. We have Okay. around 29:30 now. Okay. I think we should easily get 40-45. Yeah. I think it's 6:06. Without waiting for more time, let us start the session. Mr. Hari, Dr. Dinesh. Yes, sir. Yeah. So, Dr. Dinesh, can we start? Yes, please. Yes, please. Yes, sir. So once again, good evening all. Good evening all. Let us start with the session. We have around 30 participants and another 10 minutes. We should be having more people joining in. So today we are having Dr. Dinesh Garg as our eminent speaker and a guest faculty for our counselor program. So today, as you all are aware, we are going to take you through the basics of posterior segment part of eye. So as we were discussing, just for revision purpose, it's very important to have a good knowledge of what we are delivering and what we are reproducing. So that is why we focus equally on the clinical and technical part of counseling, and that is why we are conducting these 4 sessions, which are basics on anterior and posterior, and then advancements in anterior and posterior. So yesterday we had Dr. Pratibha, who took us through the basics of anterior segment, and today we are having Dr. Dinesh Garg as expert speaker to take us through basics of posterior segment of eye. So welcome, Dr. Dinesh Garg sir. Let me introduce Dr. Dinesh quickly. He is a medical director and VR surgeon at Advanced Center for Eyes at Ludhiana. He has been professor in Ophthall department in DMCH Ludhiana. He is a fellow of All India Collegium of Ophthalmology. He has done fellowships from prestigious institutes like Sankara Netralaya and Tennant Institute of Ophthalmology, Glasgow, UK. He has been a president to Punjab Ophthalmic Society. Conferences. So we are really glad to have you on our panel today to enlighten our audience with the basics of posterior segment. So we can start with your session, sir. Over to you. Thank you, sir. Thank you for this nice introduction. I think we'll just start right away. Can you please stop sharing?
Are you able to see my screen, sir? Is everybody able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's visible. So this introduction, sir has already given. I'm working in Ludhiana, and I'm in charge of the Advanced Center for Eyes at Ludhiana. I specialize in the diseases of the retina, in addition to being a cataract surgeon. So most of you must be. There is a problem with. I'm sorry, I think there is a problem with the keynote. So this is where we left. Posterior segment of the eye. This diagram most of you must have seen or come across. This is the diagram of the eye, and brought this model for you for a easier understanding. This is ये आँख का पूरा model है. So this is the front part of the eye, which we call cornea, and there is a small brown shaped structure, which is the pupil, and then the lens. Okay, so if I just remove this part, so what we have here is, this is the cornea, and this is the pupil, and behind that is the lens, which is attached here. Okay, and behind the lens, whatever structures are there, उसके पीछे जो भी structures आपको दिख रहे हैं, that is part of the posterior segment. So this will include this gel-like transparent material which fills up the eye, जो आँख का सारी इस cavity को fill करता है, which is called vitreous. Okay, I hope you are able to see this model. So ये जो lining है, which is colored, and ये vessels of the retina are seen. This is pars plana area of the uveal tissue, and if we see it from outside, so if you cut it open like this outer tough part is sclera. Okay, and there is this layer which is called the choroid, and then the retina comes. So eye has three layers. One is this strong layer which protects the eye. This is the sclera. This is how it is shown. Then there is this choroid, which is the vascular structure, and ये जो blood supply देता है, and then the neurosensory part, or the vision देने वाला part, retina. And all this, all the information which we get from this, यहाँ से जो image बनता है retina के ऊपर, that goes to the brain through this optic. So the posterior segment will include retina, choroid, vitreous, and the optic. Okay. I think we are again getting stuck. So for seeing the eye, or the posterior segment of the eye,
we need to dilate the pupils, और पुतली को फैलाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए नॉर्मली आपके क्लिनिक्स में फेनाइलेफ्रिन, ट्रोपिकामाइड कॉम्बिनेशन सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, जो आई ड्रॉप्स होते हैं, जिसको हम different नाम से आते हैं, ट्रोपैक, पी, ट्रोपिकासिल प्लस एंड अदर थिंग्स. So this is a combination of phenylephrine eye drops as well as tropicamide eye drops. ये 2.5% in drops. So we usually put it 2 to 3 times. फिर पेशेंट को आंख बंद करने के लिए कहते हैं. तो dilatation takes about half an hour to 45 minutes with this drops. There are other ways of doing this, and वो वाली मेडिसिन जो हैं, they may take little longer. So, and this effect remains for 4 to 8 hours. So there are certain conditions where we should not be using these drops. जैसे shallow interior chamber है, जिसमें के ग्लूकोमा होने का खतरा रहता है, उसमें हम ये ड्रॉप्स नहीं डालते. या कोई हेड इंजरी का पेशेंट है जहाँ पे हमने पीपल्स मॉनिटर करने हैं, तो we will not use these drops. So this is a typical fundus diagram. You might have seen some, कुछ लोगों ने देखा होगा कि आपके सर्जन जैसे ऐसे करके इसको ड्रॉ करते हैं. रेटिना है, red arteries are drawn as red, vessel veins are drawn as blue, and any hemorrhages like this in red. कोई break होता है तो it is drawn like this, lattice is drawn like this, some pigment is drawn like this, small atrophic break will be drawn like this. और ऐसे जब रेटिना अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाता है, तो that is called retinal detachment, that will be drawn as blue. The attached retina is red. In addition, कुछ conditions में रेटिना की छोटी छोटी hemorrhages या soft exudates या yellowish deposits होते हैं, तो this can also be drawn. So ये एक typical fundus diagram है. कुछ लोगों ने अपने surgeons को ये draw करते हुए देखा होगा. ये जैसे अपने को यहाँ दिख रहा है, so it will be something like that. So drawn from the front side. Somebody is seeing it from this, so he will be able to draw it. I'm sorry. Should I just keep it like this? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. You can keep it like that. You are trying to advance with the cursor or some remote? Or the up-down button? Up-down button. You can just try and click, on the cursor on the screen. Just try doing that on the screen itself. Okay. Yeah. So ये color coding है, जैसे रेटिना की arteriole hemorrhage, microaneurysm या attached retina या whole break है, तो that is to be drawn like red. Retinal venules, detached retina, outline of break or drusen is blue. Now drusens are actually yellow. Drusen or exudate or edema yellow. Vitreous के अंदर कोई भी hemorrhage है या opacity है, that is green. Pigment and detached choroid is brown, and ora serrata is black. So this is how a vitreoretinal chart will look like. और ये optic nerve drawing. So ये जो chart है, this represents 3 zones. One is near the arcades or the equator, and then the ora serrata, and beyond this is the pars planaris. So on this chart, हम इसको 3 zones में divide करके accordingly, यदि if there is a lesion here, यहाँ पे यदि कोई चीज है तो वो यहाँ draw होगी. यदि वो center के area में है, तो accordingly this, so and also clock hours, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clock hours, 12 clock hours.
तो ये जो रेटिनल चार्ट है, ये इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी के लिए बक्कल किया करते थे. नाउ डेज बिकॉज विट्रेक्टमी इज मोर कॉमन, तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई है कंपैरेटिवली. सो सम पीपल डोंट इवन ड्रॉ दिस चार्ट, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट ये चार्ट ड्रॉ किए जा सकते हैं एंड इनको अकॉर्डिंगली जो स्पॉट जो चीज हमें दिखानी है तो उसको दिखाई. सिमिलरली जो ऑप्टिक नर्व है दैट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन. इसके अंदर कप है, कितना बड़ा है, वेसल्स कैसे हैं, ऑल दैट. ठीक है. तो रेटिना को चेक कैसे करना है? यू माइट हैव सीन योर सर्जन्स और आई स्पेशलिस्ट डूइंग डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी. एक छोटा सा ऑफ्थैल्मोस्कोप हैंड हेल्ड टॉर्च की तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे बहुत क्लोज जाके द सर्जन ट्राइज टू लुक इनटू द आई. और एक इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप होता है जो यूजुअली सिर के ऊपर सर्जन लगा के एक लेंस लगा के उसके थ्रू दिखते हैं. और द थर्ड वे ऑफ डूइंग इट इज विद द इनडायरेक्ट स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी. जो नॉर्मल स्लिट लैम्प होता है उसके आगे एक 90D या 78D लेंस लगा लिया जाता है इन बिटवीन, तो आपको रेटिना की डिटेल्स दिखनी शुरू हो जाती हैं. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी. सो दीज आर द वेरियस वेज in which we can examine the retina. Okay. So ये direct ophthalmoscope है, if some people have seen. So ये ऐसे करके इसको फोकस करके, but इसका फायदा ये होता है कि you can see the image large. तो यदि सिर्फ कोई छोटी डिस्क देखनी है, मैकुला देखना है, छोटा सा एरिया देखना है, तो ये ट्राई किया जाता है. और यदि हमने सारा रेटिना एक ही व्यू में देखना है तो इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप यूज करता है ना. आजकल ये कम यूज करते हैं बिकॉज इसमें पेशेंट के बहुत क्लोज जाना पड़ता है, और सम पीपल मे नॉट बी कंफर्टेबल विद दैट. एंड स्पेशली द अदर टेक्निक्स ऑफ इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी एंड स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी, दे गिव अ बेटर व्यू. एंड उसमें आप दोनों आंखों से देख रहे हो तो आपको एक स्टीरियोप्सिस या डेप्थ परसेप्शन भी मिलती है, तो उसका व्यू बेटर होता है. इसलिए मोस्टली पीपल प्रेफर टू डू दैट. पर जो पेशेंट जैसे बेड के ऊपर लेटा है, ही इज नॉट एबल टू सिट, और ही इज नॉट एबल टू ट्रेवल. कई बार हमें वार्ड में जाके पेशेंट देखना पड़ता है, कोई सिक पेशेंट है, आईसीयू में पेशेंट है, तो उनके लिए ये चीज यूज की जा सकती है डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप. समटाइम्स बच्चे हैं जो कि वैसे नहीं दिखाते, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है. दिस इज इंडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस. इसमें लाइट जो है ऊपर से आती है और व्यूइंग भी ऊपर से ही होती है. देयर इज अ हेडबैंड एंड देयर इज अ लाइट एंड अ व्यूइंग सिस्टम. एंड ये जो सर्जन के हाथ में लेंस होता है, इसको कंडेंसिंग लेंस कहते हैं. यूजुअली 20 डायप्टर या 30 डायप्टर का होता है, जिसके थ्रू वो इमेज जो है यहाँ एयर में बनता है एंड यू आर एबल टू सी दैट. पर इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये इमेज जो है उल्टा दिखाई देती है. पर वो आपके लिए शायद नहीं इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज सर्जन ने ड्रॉ कर लेना. तो यूजुअली इसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू डू दैट. या फिर मोस्ट कॉमनली जो चीज आजकल यूज की जा रही है वो ये है, इसको कहते हैं इंडायरेक्ट स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी. और इसमें ये वाला लेंस 90D या 78D लेंस यूज किया जाता है. पीपल डायलेट कर लिए जाते हैं और पीछे से रेटिना जो है वो दिखाई दे सकता है. सर, इज इट अ इंटरेक्टिव सेशन इफ समबडी इज विलिंग टू आस्क समथिंग ऑन जूम, या मैं सिर्फ कंटिन्यू करूं ऐसे ही? मिस्टर कौशिक, हेलो हेलो. Yes, sir. ये कुछ इंटरेक्टिव सेशन है क्या? कोई कुछ पूछना चाह रहा है या मैं कंटिन्यू करूं ऐसे ही? You continue. At the end of it, we will have question answers. Okay. If somebody wants to know in between, हाँ, so अगर कुछ है तो पूछ लीजिए बीच में, और you can just type in chat box. okay, okay.
So that's fine. Thank you. So in addition to जो हम normally देखते हैं, जैसे एक आई स्पेशलिस्ट ने पर्दा देख लिया, तो ये सब चीजें दिख रही हैं, नॉर्मल पर्दा भी दिख रहा है, तो उसमें कोई डिफेक्ट्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज मैंने देखा, कल किसी और ने देखा है, तो उसमें वेरिएशन हो सकती है। तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज टू टेक ए पिक्चर ऑफ दैट, व्हाट वी कॉल रेटिनल इमेजिंग, या उसको फोटो ले लीजिए। और कई बार क्या होता है कि जो रेटिना के का पर्दा जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज ऑफ सम रीजन कि ये जो बीच वाला हिस्सा है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जेल की तरह होता है, इसमें कोई रुकावट आ गई है, काइंड ऑफ हेमरेज हो गई है या हेज हो गई है, तो हमें रेटिना नहीं दिखाई देता। तो उसके लिए हमें रेटिना की इमेजिंग की जरूरत पड़ती है। और समटाइम्स यदि वेसल से लीकेज है तो किस टाइप की लीकेज है, क्यों हो रही है, वो सब देखने के लिए भी वी नीड रेटिनल इमेजिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। सो एक तो पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि व्हाट इज द डिजीज, फिर जब हमने दवाई शुरू कर दी तो what is the response to that treatment which we are doing, maybe we are doing laser, maybe we are doing injections, तो उसको देखने के लिए कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, then that also we need to do imaging। एक बार फोटो करी, उसके बाद जब उसको ट्रीट किया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो we need to find out कि उसका कुछ इफेक्ट हुआ। और कई बार बीमारी को अच्छी तरह समझने के लिए भी सर्जन्स जो है वो रेटिना की इमेजिंग की सहायता लेते हैं। एंड देयर आर few imaging techniques which are used for retinal evaluation or the posterior segment evaluation. And everybody of you must have heard of OCT, optical coherence tomography, which is again a kind of a live histology scan. या retinal imaging में fundus photography और fundus fluorescent angiography, या यदि रेटिना नहीं दिख रहा तो अल्ट्रासाउंड. So these are the few things which we will learn a bit about. So ये एक अल्ट्रासाउंड होता है. Why eye ultrasound is separate from other ultrasounds? Because eye में हमें बहुत ज्यादा deep नहीं जाना है, but we want a good quality image. So जो इसका power होती है, this is 12 megahertz, 10 megahertz, or even up to 50 megahertz. And उसकी resolution becomes better, but the depth is not much. So we just are able to reach up to say 40 millimeter or 4 centimeter or be up to 6 centimeter. तो ये mostly इसीलिए ophthalmology departments या eye clinics में ही आपको एक separate machine मिलेगी जिसको B scan या B scan ultrasound कहते हैं. तो इसमें साथ में ये लाइनिंग्स दिखाई देती हैं जिनको ए स्कैन या सेक्शन उसका कट करके क्या वहां पे उसकी इंटेंसिटी है कि इमेज का वो कितना रेजोल्यूशन दे रहा है, तो वो भी साथ में दिखाई देता है. सो दिस इज अ कंबाइंड बी एंड ए स्कैन. सो व्हेनेवर देयर इज नो व्यू ऑफ द रेटिना और हेजी व्यू ऑफ द रेटिना, तो उस कंडीशन में सर्जन्स मोस्टली ऑर्डर बी स्कैन. So this is how a B scan looks like a report. ये लेंस वाला पार्ट है जो फ्रंट वाला पार्ट है, और ये रेटिना का इमेज है, और ये जो एक शेडो बन रही है ये ऑप्टिक नर्व का शेडो है. तो रेटिनल इमेज है. व्हेन देयर इज समथिंग ऑन दिस, आइदर अ डिटैचमेंट, देन दिस विल मूव अवे, या कोई इसमें फॉरेन बॉडी पड़ी है, या यहाँ पे ये जो क्लियर एरिया है जिसको विट्रियस जेल कहते हैं, you might find some shadows in this which is because of either inflammation, या जैसे endophthalmitis में हो जाता है, या जैसे कोई hemorrhage में हो जाता है. तो ऐसी कुछ conditions होती हैं, तो उनमें B scan के ऊपर you will find abnormalities. So indications for ultrasound, किन किन conditions में हम ultrasound order करेंगे. And I think as a counselor also one must know, एक तो जो posterior vitreous detachment होती है, जबकि vitreous अपनी जगह से हिल जाता है,
या रेटिना डिटैच हो गया है, रेटिनल डिटैचमेंट, टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट रेगमेटोजिनस है, एक्सुडेटिव है, ट्रैक्शनल है, कोराइडल डिटैचमेंट, या विट्रेस के अंदर हैमरेज है। कई बार ट्यूमर्स भी होते हैं, तो कैंसरस ग्रोथ्स हो सकती हैं, रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, कोराइडल मेलानोमा हो सकता है, या कोई फॉरेन बॉडी है। सो आपके लिए तो इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब कई बार पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट या रेटिनल डिटैचमेंट को डिफरेंशिएट करना होता है, या कोई ट्यूमर हो, या कोई हेमरेज और एंडोफ्थल्माइटिस को डिफरेंशिएट करना है, या कोई इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी है, तो वो देखना है कि वो कहाँ पे है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स which we are able to pick up on ultrasound. So ये मशीन काफी लोगों ने देखी होगी, तो और there are similar machines available। और फंडस कैमराज, आजकल छोटे छोटे फंडस कैमराज भी आते हैं जो स्लिट लैम्प के ऊपर लगा लिए जाते हैं, या कुछ हैंड हेल्ड कैमराज भी आजकल अवेलेबल है, बिकॉज दे कैन बी अटैच्ड टू योर मोबाइल फोन्स। सो दीज आर फंडस कैमराज, एंड जब इसके अंदर बाकी सब अटैचमेंट्स होती हैं, कुछ फिल्टर्स होते हैं, तो हम इसको रेटिना की एंजियोग्राफी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो छोटे कैमराज हैं उनमें सिर्फ फंडस की फोटो ही आती है। तो जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो ये ऑप्टिक डिस्क है, ये एरिया है, सेंट्रल एरिया है, एंड ये जो है रेटिना के ब्लड वेसल्स है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की बात है कि रेटिना के ब्लड वेसल्स जो हैं वो नॉर्मली लीक नहीं करते, वो दे विल फॉर्म ए पैटर्न लाइक दिस। ठीक है, जब भी ये ब्लड वेसल्स से लीकेज हो रही, या ये फ्लोरेसेंट जो है वो लीक कर रही है, तो दैट इज एबनॉर्मलिटी। ठीक है, सो दैट कैन इजीली बी पिक्ड अप व्हेन वी डू एंजियोग्राफी। सो देयर आर फ्यू कंडीशंस वेयर फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी इज रिक्वायर्ड: मैकुलर एडीमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर डीजनरेशन, रेटिना की ब्रांच की वेन बंद हो गई है, आइदर फुल जिसको कहते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, या एक पार्ट ऑफ इट जिसको कहते हैं ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन, या कोई मैकुला के ऊपर मेम्ब्रेन बन गया, या पत्थर बन गया, या कोई ट्यूमर है। तो ऐसी कंडीशंस में द सर्जन विल से कि इनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या इसको मैकुलर एडीमा है, या इसको मैकुलर डीजनरेशन है, तो आप इनकी एंजियोग्राफी कराइए। तो somebody will come to you and tell you कि जी सर has told me कि इनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और इनको आप सारा समझा दीजिए। तो you see that image, जो फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है उसको देख के आप उसके ऊपर उसको समझा सकते हैं पेशेंट को कि देखिए ये लीकेजेस हैं, ये ब्लड वेसल्स फ्लोरेस कर रहे हैं, और यहाँ से डाई निकल रही है, तो these are abnormal vessels, so these need to be taken care of either with the help of injections or with the help of laser. Same होता है जैसे कि ब्रांच रेटिनल या सेंट्रल रेटिनल वेन occlusions. Macular degeneration also is becoming an important part. So CRVO में जो ऐसे करके पिक्चर होगी, dye will leak from different areas and will pool in the center. Similarly, in जब यहाँ पे कुछ नए वेसल्स बन जाते हैं, what we call NVD और neovascularization of the disc, जो कुछ नए वेसल्स बन जाएंगे। कोई भी नया वेसल जो बनता है वो लीकिंग वेसल, तो खास करके जो ऐसी कंडीशन होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी में या रेटिनल वेन ओक्लूजन में, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ नियोवास्कुलराइजेशन ऑफ द डिस्क। सो एंजियोग्राफी में दैट पर्टिकुलर वेसल और दैट पर्टिकुलर डिस्क विल लीक, सो दैट इज कॉल्ड अ एनवीडी। फिर कई बार देयर आर सिचुएशंस वेयर वी डोंट वांट टू गिव अ डाई टू द पेशेंट। ठीक है, कोई पेशेंट है जिसको किडनी की डिजीज है, या कोई पेशेंट है जो कि डाई को एलर्जिक है, या कोई हमें ऐसा लगता है कि इसकी कोई डिजीज है जो कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी डाई इंजेक्ट करने के बाद, तो वी जस्ट से कि इसका सिर्फ फोटोग्राफ्स कर ले। या कई बार हमने पहली बार एंजियोग्राफी करी है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वांट टू सी
we just say that we just take a photograph of that, how the things are improving or how the things have gone down. So we just do a fundus photograph. A typical fundus photo will contain the image of the center of the very back inside of the eye of the retina. Retina की image आएगी, उसमें optic nerve, macula और main vessels दिखाई. So again, it can be a very important tool to document and compare it with, है ना? So this is another imaging technique, what we call autofluorescence. So there are certain spots or lesions in the eye, जो आंख के अंदर कुछ स्पॉट होते हैं जो ऑटोमेटिकली फ्लोरेस करते हैं. फ्लोरेसेंस का आपको मतलब पता ही होगा कि जब हम डाई इंजेक्ट करते हैं और ब्लू फिल्टर के थ्रू देखते हैं तो वो चमकते हैं. सो देयर आर सर्टेन स्पॉट्स इन द आई लाइक ड्रूजन्स और डिस्क जो कि अपने आप ही चमकते हैं यदि आप डाई इंजेक्ट ना भी करो तो भी. तो उसको कहते हैं ऑटोफ्लोरेसेंस. सो autofluorescence is also coming in a big way these days as an imaging technique. Although वो सिर्फ जैसे geographic dystrophy या atrophy या dry AMD के लिए अभी तक यूज होते हैं ऐसे. So age-related macular degeneration, detachment, dystrophy, CSR, vitelliform migraine, ऐसी conditions में the surgeon may just say कि आप इसका autofluorescent image. Autofluorescent image will look like this. तो ये जो spots हैं ये आपको चमकते हुए दिखाई देंगे. So very important imaging modality these days in the clinics is what we call optical coherence tomography और OCT. और सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है कि ये इसके अंदर कोई डाई इंजेक्ट नहीं करनी पड़ती. इट इज नॉन इन्वेसिव टेक्निक. इट इज मोर लाइक टेकिंग अल्ट्रासाउंड ऑफ द आई विद अ वेरी हाई रेजोल्यूशन. एंड जैसे आप किसी टिश्यू को काट के स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखते हो, ऐसे ही इसमें टिश्यू काट बिना लिविंग टिश्यू को आप देख सकते हो या उसमें कोई डिफेक्ट्स हैं वो देख सकते हो. So that is what is optical coherence tomography, and most of the eye clinics nowadays will have optical coherence tomography for imaging of the posterior segmental disease. So कोई मैकुला का छेद है, मैकुलर होल, पक्कर, एडीमा, ARMD और मैकुलर डिजनरेशन, ग्लूकोमा, CSR, पैप्टिक रेटिनोपैथी, विट्रियस ट्रैक्शन और मेम्ब्रेन, इन सब कंडीशंस में OCT is useful, and again on a repeated follow-up, OCT may be required just because के हम उसको देखना चाहते हैं कि वो चीज चेंज हुई, ठीक हुई या नहीं. ठीक है. So OCT is used to evaluate the optic nerve as well as the retina. So even glaucoma के patients में जिसमें हम optic nerve का डैमेज देखना चाहते हैं, वो उसमें भी OCT is used. OCT uses light waves. So in conditions where there is a interference with light passing through the eye, like जहाँ पे dense cataract है या vitreous की hemorrhage है, वहाँ पे OCT यूजफुल नहीं होगी. Of course वहाँ पे हमारे पास अल्ट्रासाउंड है जिसके साथ हम यूज कर सकते हैं. एक नई टेक्निक है ये, it's part or extension of OCT, what we call OCTA or optical coherence tomography angiography. So this gives you the retinal circulation as well as choroidal circulation of the retina. पर्दे के vessels की circulation के बारे में आपको information देता है डाई इंजेक्ट करने के बिना. ठीक है. तो this is a new modality, but the indications for this are limited. अभी तक इसकी, क्योंकि इसका फील्ड अभी सिर्फ मैकुलर एरिया तक ही आ रहा है, बिल्कुल पेरिफेरी पे जाके हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी की इमेज नहीं ले पा रहे. सो अभी तक ऑक्टा की इंडिकेशंस जो हैं वो लिमिटेड है.
but they may be useful in diabetic retinopathy, RMD, occlusions, telangiectasias, inflammations as well as. So ऑक्टा का इमेज कुछ ऐसे दिखाई देगा जिसके अंदर आप वेसल्स, ब्लड वेसल्स भी देख पाएंगे और रेटिना के नीचे जो लेयर्स हैं उनको भी सेपरेटली। तो ये तो हो गया जो रेटिना का पार्ट है, जो एक what all we see in the posterior segment, mostly retina, optic nerve, vitreous और choroid, और उनको देखने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत है और क्या क्या मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम उसकी इमेजिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद वी विल टेक अप दी इंडिविजुअल डिजीजेस सेपरेटली। Sir, can we have some discussion at this stage or we just continue with this? Hello? Hello? Yeah, we can continue, doctor. Okay, so we will just continue with this. Otherwise, we can stop for a while and have discussion about imaging and whatever we have dealt with. Okay. Yeah. Okay. So after that, we will take up the disease. I think that will be Yes. better because that will break the monotony. Yeah, I got disconnected in between. Mr. Hello? Hari? Yeah. What was the question, sir? No, I think we will be able to, ये monotony भी disturb थोड़ा करेंगे, तो people will be more interested. So we can discuss whatever queries everybody has till now. And we will go on to the disease. Okay. Yeah. So that's that's fair. So I request group, if you have questions. So I'll just stop sharing for a moment and then we can have a discussion and then again come back to this. Yeah. So I request audience, if you have any questions on whatever has been covered till now, so you can ask your questions either in chat box or you can simply raise your hand and or unmute yourself and ask the question. So I hope everybody is getting a feel of what we have discussed till now. कुछ लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं. I think we will continue, sir. So Sure, at sir. the end of it, if anybody has any question. Yeah, Mr. Hari. Yes, sir. Yeah, just be around. There is a poor connectivity at my end. So okay. I'm here. Yeah, I'm please. here. Okay. So please continue. Sorry to interrupt. Okay. So I think there is a question that about ora serrata. So I'll just take this up. जैसे ये रेटिना है, तो रेटिना का जो बिल्कुल आगे का हिस्सा है anteriorly when it merges with the choroid, ठीक है, and it looks something like this. This is what the area is called ora serrata. This is the most peripheral area of the retina, which usually do not contribute to vision, but जो पेरिफेरल ब्रेक्स होते हैं, डिटैचमेंट शुरू होती हैं, वो यहाँ से होते हैं. और उसके आगे का जो एरिया होता है, जिसको जो सिलियरी बॉडी का पार्ट होता है, जहाँ पे पार्स प्लेना और पार्स प्लाइकेटा आते हैं. पार्स प्लेना इज द एरिया वेयर जहाँ से हम रेटिना की सर्जरी इनिशिएट करते हैं. So this is the most peripheral part of the, जैसे ये serrations बनी हुई है ना, छोटे छोटे जैसे दांत के टाइप, तो this is what is called serrata, ora serrata. This is. So I hope that is clear. Thank you, sir. Yeah. So we'll just continue with the rest.
and then Yeah, there is one more question on the chat box. Sure, sir. Yes, we'll take. Will PVD result in RD after a few years? Yeah, PVD. PVD is posterior vitreous detachment. So this whole cavity is filled of vitreous, which is a gel or वो transparent. But there are certain strong attachments of vitreous. Strong attachments of vitreous are one at the edge of the disc or on the disc, at the retinal vessel, and at few points where there are some pigment or hole or lattice or जहाँ पे जो vitreous है वो strongly attached. So whenever there is a posterior vitreous detachment or the vitreous detaches from its base, so it can pull along either a brake or a vessel or something. So if it pulls a vessel, there'll be a hemorrhage into the vitreous. So if it pulls a brake, retinal brake, we will come to that in the next part of the talk. Then that brake can accumulate fluid behind it and lead the retina to detach. So it is very important that a thorough examination of the retina is done in all cases of posterior vitreous detachment. And if there is any break or a suspicious area, it should be either lasered or not. So we will come to iridomacular degenerations as well. Yeah. So I think we'll go on to the next topic about diseases. And so I was just going to talk about posterior vitreous detachment. Okay. So this is how the vitreous will detach from its retina, and if there is any strong adhesion with the vessel or at the back of the retina, it will pull a brake. So normally vitreous is attached to the disc, at the vessels and at the ora serrata. With age, it liquefies, collapses, leading on to a posterior vitreous detachment, and it can lead to floaters and retinal detachment. It can be diagnosed on an indirect ophthalmoscopy. So most of the times you might have seen patients complaining of KG मेरे को काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, which are floaters basically. So those floaters are because anything which is floating in the liquefied vitreous is forming an image onto the retina. However, there is nothing outside. बाहर तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी ओपेसिटी जो विट्रियस के अंदर घूम रही है वो रेटिना के ऊपर इमेज बना. So that is seen by the patient as some black spots or the floaters, which move as the eye moves. तो जैसे जैसे आंख घुमाता है उसके साथ साथ वो घूमता है. So that is the vitreous opacities which are causing floaters. And I told you how the retinal detachment can occur because of a posterior vitreous detachment, because it will pull a brake. So lattice degeneration, जब आप रेटिना की पेरिफेरी में चेक करते हो with indirect ophthalmoscopy, you might find spots like this. Most of your surgeons will tell you that इनके अंदर lattice degeneration है, या lattice degeneration के साथ छोटे छोटे breaks. High myopia में तो बहुत ही common है, and it can present as floaters or it may be asymptomatic. So these kind of lesions and flat breaks, these can lead to a retinal detachment later. So यदि हम लेसिक लेजर करते हैं या कोई भी कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो यदि रेटिना में आपको कोई ऐसा स्पॉट दिखता है जो कि बाद में रेटिनल डिटैचमेंट को क्रिएट कर सकता है, those lesions need to be lasered. तो उनको लेजर करने के लिए ऐसे करके स्पॉट्स लगा दिए जाते हैं ऑल अराउंड, तो वो ब्रेक जो है वो सील हो जाती है. इट कैन बी कॉल्ड एज अ बराज. जैसे हम कोई किसी चीज को रोकने के लिए वहां पे कोई बराज बना दें,
तो ऐसे करके लेजर के स्पॉट्स के साथ या क्रायो के स्पॉट्स के साथ उनको बराज कर दिया जाता है। सिमिलरली जैसे पीवीडी में मैंने आपको बताया कि ब्रेक हो सकता है, जहां पे भी कोई स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ वहां से वो पुल हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स कैन बी देयर, ठीक है। बट अभी रेटिना की डिटैचमेंट नहीं हुई, इसके पीछे फ्लूइड नहीं गया है, रेटिना अपनी जगह से हिलना नहीं शुरू हुआ है, और ये पेशेंट फ्लोटर कंप्लेंट कर सकता है, पेशेंट मे नॉट कंप्लेंट एनीथिंग, जस्ट आपको एग्जामिनेशन पे पता चला कि वहां पे ब्रेक है। तो दीज काइंड ऑफ ब्रेक्स आल्सो नीड टू बी यूज्ड, बिकॉज ये कभी भी उठ के रेटिनल डिटैचमेंट कर सकते हैं। तो इनको ऐसे करके राज लेजर या रेटिनल फोटोकोगुलेशन उसको सराउंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक फोटोग्राफ है जो कुछ बच्चों ने बनाई है, तो टू शो अ रेटिनल डिटैच। तो जब यहाँ पे ब्रेक होता है एंड देयर इज सम फ्लूइड कलेक्शन बिहाइंड द ब्रेक और बिहाइंड द रेटिना, जो दो लेयर्स हैं, जो एक कोराइड है और एक रेटिना, जो कि यहाँ पे एक अदरवाइज कोई स्पेस नहीं होती, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पोटेंशियल स्पेस। तो इसके बीच में यदि कोई फ्लूइड आ जाता है तो जो रेटिना वाला हिस्सा है, जो पीछे अंदर वाला लेयर है, वो अपनी जगह से हिल जाता है, व्हाट वी कॉल रेटिनल डिटैचमेंट। सो द रेटिना स्टार्ट्स पुलिंग ऑफ फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे वो एज मेम्ब्रेन जो और एज ए कर्टेन फील होता है। The person will come to you with flashes, floaters, and a kind of a curtain coming in front of the eye. The retina जो है अपनी जगह से उठ जाता है और वहां पे fold भी। So when that retinal detachment comes to almost the center, तब patient को vision की disturbance होती है। So there may be a retinal detachment for a few months to a week, to a few weeks to a month, जबकि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं था, या उनको थोड़े बहुत फ्लोटर्स थे, या उनको कोई डिस्टॉर्शन नहीं थी, तो ग्रेजुअली करके वो सिम्टम्स बढ़ गए और सेंटर का विजन भी कम हो गया और डिस्टॉर्शन हो गई। तो वो ग्रेजुअली जो है वो रेटिना के पीछे फ्लूइड जाता रहा और वो डिटैचमेंट बढ़ती रही। सो इफ वी डोंट सेटल दिस रेटिना, दिस डिटैचमेंट विल कीप इंक्रीजिंग और ये सिम्टम्स जो है वो बढ़ते रहे। तो ऐसे जो ब्रेक है, ब्रेक के पीछे रेटिना फ्लूइड चला गया और रेटिना जो है वो अपनी जगह से हिलना शुरू। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन विद फ्लोटर्स, शैडो इन द विजन एंड फ्लैशेस। मायोपिया में, ओल्ड पेशेंट्स में चोट लगने के कारण, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो ये बी स्कैन में भी और इंडायरेक्ट पे भी मोस्टली दिख जाता है। यदि आपको व्यू हेजी है तो नेचुरली आप बी स्कैन कर सकते। सो रेटिनल डिटैचमेंट को सेटल करने का क्या तरीका है? यू सी, एक सिंपल सी बात है कि जब ये पर्दा जो है वो अपनी जगह से इधर को आ गया, अंदर को आ गया, यू हैव टू वेज टू डू इट। या तो आप बाहर एक स्पंज फिक्स कर दें जो कि इसको अंदर को पुश कर स्क्लेरा, ठीक है, और रेटिना को उसके साथ जोड़, विच इज कॉल्ड अ स्क्लीरल बक्कल, एंड दिस सर्जरी इज डन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से एक स्पंज, सिलिकॉन स्पंज होता है या सिलिकॉन बैंड होता है या सिलिकॉन टायर होता है जो लगा दिया, और वो रेटिना को अंदर को पुश कर देता है और उसके बीच का जो फ्लूइड होता है उसको हम ड्रेन आउट। तो दिस इज वन काइंड ऑफ सर्जरी विच इज डन फॉर रेटिनल डिटैचमेंट। पर उसको हम कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस में नहीं कर सकते, या वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होता। आई थिंक दैट वी कैन लीव इट टू द सर्जन, बट सफाइस टू से कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें कैटरेक्ट वगैरह अभी नहीं बना है या जिसमें रेटिना की ब्रेक्स बाहर हैं, वहां पे बक्कल इजीली लगाया जा सकता है। तो यंग पेशेंट्स में सर्जन विल डिसाइड कि इनको हम पहले बक्कल का ही ऑपरेशन एडवाइस करेंगे और वो बक्कल से ही सेटल हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो बक्कल है या वो विट्रियस की सर्जरी है,
will take almost same time. सर्जरी की कैपेबिलिटी या उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा. इट मे टेक अबाउट 1 hour, 2 hours or less than 1 hour. Normally the rough idea for timing is about an hour. या यदि रेटिना की डिटैचमेंट होगी, जब ऐसे होगी, और स्पेशली यदि रेटिना साथ में स्टिफ हो गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो हम क्या करते हैं, बाय गोइंग इनसाइड द आई थ्रू पार्स प्लेना, ये वाले छेदों के थ्रू, पार्स प्लेना के एरिया के थ्रू हम छोटे छोटे 23 गेज की नीडल के साइज के 3 छेद बना के वी गो इनसाइड द आई एंड रिमूव द होल ऑफ द विट्रियस. जो मोस्ट ऑफ द विट्रियस जहां से जाके हम इसको निकाल, वी विल रिमूव द विट्रियस. जो वो रेटिना की ब्रेक है उसके थ्रू हम उसका फ्लूइड जो है पीछे से निकाल लेंगे और पर्दे को अपनी जगह पे बिठा के उस जगह के ऊपर हम उसकी सील कर देंगे, आइदर विद लेजर और क्रायो, एंड देन पुट सम फ्लूइड इनसाइड टू कीप द रेटिना पुश्ड बैक, ताकि वो पर्दा अपनी जगह पे जुड़ जाए. उसके लिए हमें या गैस डालनी पड़ती है या सिलिकॉन ऑयल. So these are the 2 treatment options for retinal detachment surgery. One is scleral buccal, the other one is pars plana vitrectomy with cryo, with endolaser and gas or oil. So this is another disease which is common. ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में काफी ज्यादा कॉमन होता है, जिसको हम कहते हैं रेटिनल वेन ओक्लूजन. जो रेटिना की वेन्स है वो ब्लॉक हो गई, और जब रेटिना की वेन ब्लॉक होती है तो देयर आर मल्टीपल हेमरेजेस, स्वेलिंग और ये एक्सुडेट्स, ये सारा कुछ हो जाता है. एंड अलोंग विद दैट जो सेंट्रल वाला एरिया होता है रेटिना का, उसमें सोजिश आ जाती है, एडिमा. सो दिस कैन बी ए पार्ट ऑफ द, बिकॉज यहां से यदि आप देखो तो ऑप्टिक नर्व से 4 अलग अलग नाड़ियां जो है निकल रही. 2 नाड़ियां ऊपर जा रही हैं, 2 नीचे पे जा रही हैं. सो 2, एक नेजल साइड पे जा रही है, एक टेम्पोरल साइड पे जा रही है. सो देर आर 4 स्मॉल ब्रांचेस ऑफ दैट सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन, which is either superior temporal, superior nasal, or inferior temporal or inferior. So there can be a occlusion or blockage of one particular vein, like a retinal branch. So supratemporal branch, supranasal branch, infratemporal branch or infranasal branch. या यदि वो यहीं पे ब्लॉक हो गई है सेंटर ऑफ दी रेटिना में optic nerve के पास ही, तो that can be a central retinal vein occlusion. So again the patient will come to you with diminution of vision, floaters and fogginess in vision. So in conditions में injections, anti-VEGF injections और laser की जरूरत पड़ती है. I think that part, treatment part and advanced procedures will be taken up in your next session. So similarly there can be a central retinal vein occlusion. विजन लॉस, डिस्क की स्वेलिंग हो जाती है, वेन्स फूल जाती हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स, डिफ्यूज हेमरेजेस. अगेन द रिस्क फैक्टर्स आर हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कुछ ब्लड, जिनमें ब्लड थिक हो जाता है. सो इन कंडीशंस में आपको फिजिशियन के चेकअप की भी जरूरत है. कंट्रोल चाहिए डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, या कोई और किसी तरह की यदि उनको बीमारी है. इवन कोविड के बाद some people got these kind of illnesses. और इनमें क्या होता है कि यदि ये ऐसे ही पड़े रहे या इनको ना ट्रीट किया जाए विद इंजेक्शंस एंड लेजर, तो लेटर ऑन जो आंख का प्रेशर है, जिसको हम काला मोतिया कहते हैं और ग्लाकोमा कहते हैं, that starts to increase. The intraocular pressure starts to increase because of the formation of new vessels. As I told you, angiography पे new vessels बनते हैं, तो इसमें new vessels बन जाते हैं, फिर pressure increase होना start हो जाता है, what we call neovascular glaucoma or a type of secondary. So CRVO and BRVO are again very important diseases of the retina. It is just like कि यदि आंख की वेन बंद हुई
तो CRVO हो गया या BRVO हो गया। वेयर एज यदि it is Hello. more like a, Yeah. you are able to hear me, sir? Yeah, in between there was some problem. Now it's okay, sir. Yeah, my earphones were not working. So I've stopped that. So it is just like a cerebrovascular accident or stroke. So it can be called as a mini stroke also. So this can be a condition which you can say to the patient कि आपका बचाव हो गया है, otherwise यदि ब्रेन की नाड़ बंद हो जाती तो अधरंग या हेमिप्लीजिया हो सकता था। तो it should be taken seriously as far as risk to life or other morbidities is concerned. Then very important part of retina practice all over India and all over the world is what we call diabetic retina. ये जो vessels हैं इनके अंदर bleeding, leakages और new vessels बनने शुरू हो जाते हैं because of diabetes. So this is, as I told you, is normal retina. और जब यहाँ पे vessels में bleeding, leakages, hard exudates और vessels engorgement, bleeding, looping शुरू हो जाती है, that is called diabetic retinopathy. Okay. और बहुत सारे पेशेंट्स रेटिना के क्लिनिक्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण आते हैं, जिसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिनके हिसाब से हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है। एंड एज यू आर अवेयर, डायबिटीज इज बिकमिंग वेरी कॉमन इन इंडिया। एंड इवन जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे लोग कहते थे कि हम बहुत काम भी करते हैं, डाइट का भी ख्याल रखते हैं, वर्जिश भी करते हैं, यहाँ पे डायबिटीज नहीं होती, वहां से भी आजकल डायबिटीज के पेशेंट्स आ रहे हैं। और क्या होता है कि बिकॉज दे आर नॉट डायग्नोस्ड आइदर विद डायबिटीज और विद कंडीशंस ऑफ diabetic retinopathy and all, because of either lack of knowledge or lack of facilities, so they come late. So the complications of diabetic retinopathy had already occurred. So we will go to those stages of diabetic retinopathy as well, and what all treatments we can do. So this is just a kind of a diagrammatic representation of diabetic retinopathy. As you all know कि ये माइक्रो एंजियोपैथी है, जो स्मॉल वेसल्स की डिजीज है, जो कि सारे शरीर में इफेक्ट करती है, किडनी पे भी, हार्ट पे भी, नर्व्स पे भी। तो नॉर्मल आई इज समथिंग लाइक दिस। जब उसमें नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तो सिर्फ हेमरेजेस और कॉटन वूल स्पॉट्स और माइक्रो एनेरिज्म्स होते हैं। जब abnormal vessels और न्यू वेसल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है। So these are the fundus photographs of a patient of moderate NPD, non-proliferative diabetic retinopathy with macular. ये color photograph है, ये black and white photograph है, and this was a 48-year-old male, which there are hard exudates, dot blot hemorrhages, ठीक है। और मैकुलर जो एरिया है, जो सेंट्रल एरिया ऑफ द रेटिना है, जिसको हम मैकुला कहते हैं, मैकुलर एरिया जो 500 माइक्रॉन्स का एरिया है, जिसके अंदर यदि लीजन्स होंगे तो दे आर सिग्निफिकेंट। सो दिस होल एरिया इज मैकुला एंड द सेंट्रल एरिया व्हिच इज कॉल्ड फोविया। इसके अंदर यदि स्पॉट्स होंगे तो वो विजन थ्रेटनिंग होते हैं, वो इमीडिएटली विजन को इफेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द टू एंजियोग्राफी पिक्चर्स। So this is another photograph and angiograms of the moderate non-proliferative diabetic retinopathy with macular area में जब डैमेज होता है, स्वेलिंग होती है, तो मैकुलोपैथी कहते हैं। तो दिस इज पिक्ड अप मोर इम्पोर्टेंटली ऑन ओसीटी कि हम उसकी थिकनेस देख सकते हैं कि सेंट्रल का एरिया, सेंट्रल सबफील्ड थिकनेस और सेंट्रल मैकुलर थिकनेस कितनी हो गई है। तो सेंटर का एरिया कितना थिक हो गया। नॉर्मली इट इज अबाउट 250 to 300 माइक्रॉन्स,
but if it goes beyond 300 microns, we need to treat. तो जब और severe disease हो जाती है, severe non-proliferative diabetic retinopathy with sarcinate maculopathy, ये blood pressure होता है तो ये ऐसे ऐसे circles बन जाते हैं. This is called sarcinate. 49-year-old male with dot blot hemorrhages, exudates, flame-shaped hemorrhages with sarcinate pattern. तो ये जो है, this is a pre-retinal hemorrhage. रेटिना के आगे एक ब्लीडिंग बन गया, उसको pre-retinal hemorrhage कह दिया. तो इसमें there must be some bleeding vessels underneath. तो ये जो एंजियोग्राम किया तो यहाँ पे देखिए, there is a leakage of vessels, a leakage from the vessels. This is a neovascularization or NVE, what we call. So this is a proliferative diabetic retinopathy with, of course, maculopathy. So ये diabetic maculopathy. So diabetic maculopathy and diabetic retinopathy is a very, very important part of practice of the retina. Because mostly जो patients आते हैं आपके पास diabetic retinopathy. अब ये आ गया OCT. तो as I told you, the central subfield thickness और central macular thickness, CMT कह देते हैं इसको, 428 यहाँ से यहाँ तक जो thickness है, ये इतनी ज्यादा है, ये इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे edema आ गया. And this is where you need injections. अलग अलग तरह के anti-VEGF injections हैं, कोई Avastin है या ranibizumab है, Lucentis है, और भी कई नए नए आ रहे हैं. तो आपको पेशेंट को गाइड करना है कि ये जो एडिमा है, ये जो स्वेलिंग है जिसके कारण नजर कम हो रही है, दिस विल गो डाउन विद इंजेक्शंस एंड यू मे नीड मल्टीपल इंजेक्शंस. एक से ज्यादा इंजेक्शंस की जरूरत पड़ जाती है और साथ साथ में आपको डायबिटिक कंट्रोल लाना चाहिए. सो ऐसे करके स्पंजी थिकनिंग और सिस्टिक स्पेसेस बन जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं. दैट्स ऑल पार्ट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी. ऐसे ये डिटैचमेंट होनी शुरू हो गई रेटिना की, सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट एज वी. ऐसे कुछ खींच हो जाती है पर्दे के ऊपर. दिस इज कॉल्ड अ पोस्टीरियर हाइलाइड मेम्ब्रेन, जो ऊपर को खींच रहा है. तो इस कंडीशन में आपको पर्दे के ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी. देन देयर कैन बी अ हेमरेज इन द विट्रियस कैविटी. ये जो कैविटी जो ट्रांसपेरेंट है, जो यहाँ पे है, ये इट कैन get filled with blood, which is called a vitreous hemorrhage. तो यदि ये रेटिना के आगे हेमरेज होगी तो this is called a pre-retinal hemorrhage. Again, it is one of the most important cause of painless sudden diminution of vision or loss of vision with floaters. Diabetic में हो सकता है, blood pressure में हो सकता है, इंजरी के बाद हो सकता है. बी स्कैन से और इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से हम डायग्नोज करते हैं, इंजेक्शन, और उसके बाद यदि उससे नहीं ठीक होता तो ऑपरेशन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके 23 गेज की नीडल जितने पतले पतले 3 छेद किए जाते हैं. एक के थ्रू फ्लूइड अंदर डाला जाता है, दूसरे के थ्रू लाइट अंदर डाली जाती है, और तीसरे के थ्रू जो जेली है, जो जेल है, विट्रियस जेल है, वो काटा जाता है. काट के निकाल, लिक्विड बना के उसको बाहर निकाल दिया जाता है इसके थ्रू. So that is called vitrectomy. तो that whole of hazy vitreous, जो ब्लड के साथ भरा हुआ विट्रियस है, उसको हम निकाल देते हैं और उसको एक क्लियर फ्लूइड या गैस वगैरह के साथ रिप्लेस कर देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड विट्रेक्टमी. ये जो लेजर मशीन है, जिसको हम ग्रीन लेजर कहते हैं, 532 ग्रीन लेजर, ग्रीन रेंज में आता है. ये फोटोकोगुलेशन लेजर. जैसे आप किसी चीज को जलाते हैं, कोआगुलेट करते हैं, तो जहां जहां पे भी लेजर लगेगा वहां वहां पे वो वाला टिश्यू जो है वो वाइट हो जाएगा, जल जाएगा. तो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी में स्पेशली जो पेरिफेरल एरिया है, रेटिना का बाहर वाला एरिया है, उसमें ग्रीन लेजर करके पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, व्हाट वी कॉल PRP, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन करके उस एरिया को जला देते हैं या खत्म कर देते हैं, ताकि वो अपनी ब्लड सप्लाई ना मांगे. और जब वो अपनी ब्लड सप्लाई नहीं मांगेगा
तो जो थोड़ी ब्लड सप्लाई आ रही है वो सेंटर ऑफ द आई में जाएगी, तो जो सेंटर ऑफ द आई है उसमें एडिमा नहीं होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाई वी आर डूइंग पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। बट वो जो जब आपको वो पेशेंट पूछेगा कि आपने तो वो रेटिना को जला दिया, तो मेरे को बेनिफिट कैसे होगा, तो यू हैव टू टेल हिम कि जो रेटिना जल गया वो आपको विजन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो बाहर वाला एरिया था जिसको हम फोटोकोगुलेट कर देंगे लाइट के साथ, फोटोकोगुलेशन, लाइट के साथ कोगुलेट कर देंगे और वो अपनी ब्लड सप्लाई नहीं मांगेगा। तो जो थोड़ी ब्लड सप्लाई आ रही है दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर सेंट्रल एरिया, जो कि अपना विजन वाला एरिया है। सो ऐसे ही वी गिव इंजेक्शंस एज आई टोल्ड यू, एंटी VEGF इंजेक्शंस, एंटी VEGF, एंटी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, VEGF is VEGF, vascular endothelial growth factor। एंटी VEGF इंजेक्शंस, जो ये इंजेक्शंस होते हैं ये VEGF को प्रिवेंट करने के लिए आंख के अंदर लगाए जाते हैं, ताकि VEGF बने ना और उसकी जो न्यू वेसल्स बने ना और कॉम्प्लिकेशंस ना। बट इन इंजेक्शंस की, यदि आप आई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि इनकी एक लाइफ होती है कि ये 1-1.5 महीने से ज्यादा नहीं काम करते और इनको उसके बार बार रिपीट करना पड़ता है। So you also have to counsel the patient that you might need repeat injection. So this is how a vitreous surgery is done. We have already discussed. ऐसे करके रेटिना की हेमरेज को रिमूव कर दिया जाए। इस तरह का छोटा सा कटर होता है 23 गेज और ये लाइट होती है। देन इज ऑप्टिक नर्व, जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोस्टीरियर सेगमेंट का। ये जो सेंट्रल एरिया है इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जहां से जो सारे के सारे नर्व फाइबर्स जो कि इंफॉर्मेशन आती है, जो इमेज बनता है, वो ब्रेन को भेज दिया जाता है। That goes through the optic nerve. The nerve fibers go through the optic nerve, and this optic nerve can get damaged either because of high intraocular pressure, like what we call kala-moti or glaucoma, or it can be because of injury or some other diseases of the brain. So there is a gradual loss of vision because of glaucoma. It can be diagnosed on ophthalmoscopy, intraocular pressure monitoring, OCT, and perimetry, and you treat glaucoma or either the medicines or surgery. So there can be other diseases of the optic nerve which can cause diminution of vision or loss of vision. कि इस नर्व की स्वेलिंग होगी, what we call optic neuritis, और इस नर्व के ऊपर ब्रेन का प्रेशर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है जब ब्रेन के अंदर प्रेशर होगा, बिकॉज दिस नर्व इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर यदि प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर यदि ज्यादा हो रहा है, तो वो प्रेशर जो है वो इस नर्व को भी स्वेलिंग कर देगा। सो व्हेन यू लुक एट द बैक ऑफ द आई, जो पर्दे को आप देखोगे, तो ये जो स्वेलिंग है ये दोनों आंख में नजर आएगी, दोनों ऑप्टिक नर्व्स। सो दैट इज कॉल्ड पैपिलेडिमा स्वेलिंग। सो दैट पर्सन नीड्स फिजिशियन चेकअप, एंड यदि उसको लंबर पंक्चर करके उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट करके कोई और डिजीज या कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह का इलाज की जरूरत है तो दैट कैन बी डन। सो ऑप्टिक नेराइटिस मींस कि एक आंख में ही ऑप्टिक नर्व जो है वो स्वोलन है, एंड यूजुअली नीड्स ट्रीटमेंट विद medications like steroids. So this is cystoid macular edema. Post-operatively, especially after cataract surgery, there can be a swelling at the back of the eye in the macular area. यहाँ पे fluid इकट्ठा हो जाता है in the center, just like cysts, and it is called cystoid macular edema. और इसमें भी intravitreal या posterior subretinal injection. Then there is another disease called central serous retinopathy. ऐसे करके सेंटर में स्वेलिंग हो जाती है और बैक ऑफ द
रेटिना पे कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है. OCT will look like this. And यदि आप एंजियोग्राफी करोगे तो you will find a leak. Okay, there is a accumulation of fluid at the fovea. So distortion होती है OCT angiography, and usually this subsides of its own. But if it doesn't get cured, तो जो leaking point है उसको laser करके spot को, then that fluid can stop. So that is laser photocoagulation can be done to the leaking point in central CSF. So this is what we call macular hole. जो सेंट्रल एरिया है उसको मैकुला कहा जाता है, और उसके भी सेंटर में यदि छेद हो जाता है तो वी कॉल मैकुलर होल. ओसीटी पे कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये पूरा का पूरा होल बन गया और जो इतने वाला हिस्सा था वो ऊपर उठ गया चला. तो इफ यू सी समथिंग लाइक दिस इज अ मैकुलर होल एंड दिस विल नीड सर्जरी. इसमें क्या करते हैं, जेली को रिमूव कर देते हैं, पोस्टीरियर विट्रेक्टमी करके जेली को रिमूव कर देते हैं. वी these layers, because there is no traction now, इसके अंदर जो ट्रैक्शन हमने खत्म कर दी, इनको अपनी जगह पे बिठा के then we put a gas और पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए कहते हैं, तो ये होल जो है वो सील हो जाता है. So this is again a very important cause of diminution vision in older age. तो वो बिकॉज ये सेंटर में है तो ये विजन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और जब ये भर जाता है, सील हो जाता है विद सर्जरी, then the vision improves. There can be some scar at the macula, जो कि जन्म से हो सकता है या कोई चोट लगने के कारण हो सकता है, और यदि उस स्कार के साथ वेसल्स बनने शुरू हो जाएं, what is called a neovascular membrane, then we need injection. So a macular scar can be post-traumatic, after macular hole or inflammation. इसके साथ भी विजन लॉस होता है, ओसीटी और एंजियोग्राफी करी जाती है और इंजेक्शन, और बिकॉज सेंट्रल एरिया है और उसमें यदि वेसल्स बन गए हैं तो उसमें इंजेक्शंस ही लगेंगे, बिकॉज सेंट्रल एरिया में यदि आप लेजर करोगे तो द विजन विल गेट लॉस्ट कंप्लीटली देयर एंड देन. सो सेंट्रल एरिया कैन नॉट बी लेजर्ड, only in few situations this injections will work. So same way, what we call age-related macular degeneration, and sometimes it is there in younger age group, what we call heredomacular degeneration. जो heredomacular degeneration होती है वो hereditary हो सकती है, whereas जो age-related macular degeneration होती है, as the name suggests, it comes with age. So जो lipids बॉडी में होते हैं या लिपिड लाइक सब्सटेंसेस, व्हाट वी कॉल ड्रूजेंस, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कोर्स इज एज रिलेटेड. These are of two types. One is called dry ARMD and one is called wet ARMD. Wet ARMD is a little of a misnomer because wet ARMD में neovascular membrane होता है जो कि लीक और ब्लीड करता है. So there is leakage as well as there is a bleeding. Okay, so there is a subretinal or a choroidal neovascular membrane, CNVM or SRNVM, which occurs in wet AR, not in dry AR. So dry ARMD, as of now, we don't treat except for giving some antioxidant capsules, whereas wet ARMD we treat with antibiotic injections. Okay. So जब वो ट्रीट हो जाता है या वो विदाउट ट्रीटमेंट हील हो जाता है, तो इट कैन फॉर्म अ बिग स्कार लाइक सिचुएशन हियर व्हिच इज नॉट अमेनेबल टू ट्रीटमेंट. इसका फिर उसके बाद कोई हल नहीं है. सो दिस इज अगेन अ पिक्चर ऑफ द मैकुलर डिजेनरेशन और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन. वेट ARMD like this, where there is fluid and leakage and hemorrhage, will need इंट्राविट्रल इंजेक्शन. सो कई बार क्या होता है कि ये मैकुला जो है सेंट्रल एरिया ऑफ द रेटिना, इसके ऊपर एक पक्कर या लिप बन जाता है, जस्ट लाइक जैसे रेटिना इकट्ठा हो गया, जैसे एक शीट है, बेड शीट है, वो वहां पे एक जगह इकट्ठी हो गई, समथिंग लाइक दैट. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मेम्ब्रेन एट द फोविया जो कि विजन को डिस्टर्ब करता है.
वो पेशेंट विल कम टू यू एंड से कि मेरे को डिस्टॉर्शन हो रही है, जो लेटर्स हैं वो टेढ़े हो रहे हैं, तो diminution of vision as well as distortion of vision. So that can be picked up on fundus photography as well as on OCT, and most of the times इसको हमें सर्जरी के साथ ही रिमूव करना, विट्रेक्टमी करके इस मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाता है, एंड देन इफ नीड भी कोई गैस डाल दी जाती है. सो हाई मायोपिया, I think most of the counselors will know about myopia because माइनस नंबर जो होता है, जो चश्मे में लगाया जाता है, उसको मायोपिया कहते हैं. और मायोपिया जो नॉर्मल मायोपिया होता है, जो 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक का होता है, उसमें आमतौर पे रेटिना में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. और उसमें जब हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे चश्मा उतारने के ऑपरेशंस करते हैं, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं. लेकिन देर आर नंबर्स विच आर हायर देन -6, और उनके अंदर, पर्दे के अंदर भी कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया और मायोपिक मैकुलर डिजनरेशन. सो रेटिनल डिजनरेशन एज वेल एज मैकुलर डिजनरेशन. और इन कंडीशंस में कई बार वहां पे एक वेस्कुलर ग्रोथ हो जाती है, या नाड़ों का गुच्छा बन जाता है, जिसको हम सब रेटिनल न्यूवास्कुलर मेम्ब्रेन कहते हैं. सो द हाई मायोप्स, the fundus picture will be something like this. फोटोग्राफी पे ऐसा कुछ आएगा. और ये इनमें हाई मायोपिया में डिटैचमेंट, ओपन एंगल ग्लूकोमा, लेरिस डिजनरेशन और रेटिना के छेदों की इंसिडेंस काफी हाई रहता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी डिजीज है जिसको हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं. Although this is a little of a misnomer because there is no inflammation. Itis normally means inflammation. तो यहाँ पे रेटिनाइटस लिखा गया है, पर रेटिना की कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती. रेटिनाइटस पिगमेंटोसा मीन्स के रेटिना के अंदर पिगमेंट टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं, और कुछ लोग इसको अंधराता भी कहते हैं, कि पेशेंट को और बच्चे को रात को दिखाई नहीं और डार्क में दिखाई नहीं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट ब्लाइंड. और साइडों से भी नजर कम होनी शुरू हो जाती है. और ये इट रन्स इन फैमिलीज. एक पेशेंट, दूसरा पेशेंट, जो आप पूछोगे तो उसके मामा, चाचा, कोई और थर्ड जनरेशन में भी ये चीज हो सकती है. एंड एज ऑफ नाउ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं है, एक्सेप्ट फॉर गिविंग सम विटामिन ए टैबलेट्स. देन पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीजेस में, स्पेशली ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना, जब आप रेटिना देखते हो तो उसमें कुछ सोजिश हो सकती है, जो रेटिना के नीचे का लेयर है, जिसको हम कोराइड कहते हैं, या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूवियल टिश्यू कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ पोस्टीरियर यूवियाइटिस. अलोंग विद दैट, जो ब्लड वेसल्स ऑफ द रेटिना है, दे कैन आल्सो बी इन्फ्लेम्ड, और सोजिश हो जाती है. इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिना, कोराइड एंड वेसल्स एंड ऑल ऑफ दिस. एंड दिस कैन अकर इन बोथ आइज, दोनों आंखों में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है. इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस के बाद काफी कॉमन है. सो कोई भी पेशेंट जो पोस्टीरियर यूवियाइटिस का आता है, उसमें हम ट्यूबरकुलोसिस रूल आउट जरूर करते हैं, और इसमें स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन अलोंग विद दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट यूजुअली कम्स विद नजर कम हो गई है, या धुंधला दिख रहा है, या काले काले दिख. एक और रेटिना की डिजीज है विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जिसके बारे में मैं बहुत बार पढ़ाना भी चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ, और मैं पेरेंट्स को भी बताता हूँ, विच इज कॉल्ड retinopathy of prematurity. You might have heard the name ROP, retinopathy of prematurity, जो कि सिर्फ बीमारी है प्रीमेच्योर बच्चों की. जो बच्चे जन्म से पहले पैदा हो जाते हैं, जो 1000, 1200, 1500 ग्राम के होते हैं, 2000 ग्राम से कम के होते हैं, या वो 30-32 हफ्ते की उम्र में पैदा हो जाते हैं. जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो पर्दा है, जो रेटिना है, वो पूरा बना नहीं होता. रेटिनल वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डिस्क, यहाँ से शुरू होती है, और आगे आगे को इधर को पेरिफेरी, ओरा सेरेटा की तरफ जाती है.
तो जो वेसल्स हैं वो कई यहाँ तक किस लेवल पर पहुंचे हैं और पहुंच के रुक गए हैं, दैट कैन कॉज ब्लीडिंग इन द रेटिना, जिसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब तो नेशनल प्रोग्राम के अंदर स्क्रीनिंग फॉर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी और स्क्रीनिंग फॉर आरओपी को मस्ट किया है। जो बच्चे 2000 ग्राम से कम हैं या 32 वीक से कम की एज में पैदा हुए हैं या सीख रहे हैं या नर्सरी में एडमिटेड हैं, उन बच्चों का पर्दे का चेकअप होना जरूरी है। आजकल कुछ उसके लिए भी फंडस कैमरा स्पेशली आते हैं जो कि पर्दे की फोटोग्राफ ले सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि यदि कोई रेटिना स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट उसके पर्दे को देख ले, और इनको देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ये लेट हो जाते हैं, तो वी मिस दैट विंडो पीरियड वेयर वी कैन सेव द विजन। एंड बिकॉज ये प्रीमेच्योर बच्चे हैं और ये बीमारी जो है दोनों आंखों में होती है, तो द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ विल बी ब्लाइंड if untreated. So that is why the screening is important and screening is being done. So stage 1 ROP मतलब रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। यदि वो वेसल्स किसी स्टेज पे आके रुक जाते हैं और एक एरिया बन जाता है जहां पे वेसल्स हैं और एक एरिया बन जाता है जहां पे वेसल्स नहीं हैं, और उस एरिया को डिफाइन करने के लिए एक लाइन सी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड अ डिमार्केशन लाइन और स्टेज 1 आरओपी। इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसकी स्टेजेस के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नॉर्मली स्टेज 1 आरओपी पे हम लेजर नहीं करते बिकॉज ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं और ये कई बार लेजर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टेज 1 आरओपी में हम उनको यही कहते हैं कि आप हफ्ते बाद चेक कराइए, सो दैट वी डोंट मिस दैट पीरियड वेयर वी आर एबल टू इंटरवीन एंड ट्रीट। सो स्टेज 2 में दिस लाइन बिकम्स थिक एंड व्हाट इज कॉल्ड अ रिज, और इसमें पॉपकॉर्न जैसे टफ्स बन जाते हैं और लूप्स बन जाते हैं। अब इस स्टेज में हमें लगता है कि दिस विल नॉट ग्रो फर्दर, so this avascular retina or avascular area needs to be treated with laser or destroyed with laser. So stage 2 या stage 2 plus या stage 3 में लेजर किया जाता है। So this is stage 3 and if left untreated, यदि हम इस पीरियड को छोड़ दें तो within few days, maybe 3 days to 7 days, ये वाली स्टेज से नेक्स्ट स्टेज 4 या स्टेज 5 में ये बीमारी चली जाती है, जिसमें के ऑपरेशंस के साथ भी वी आर नॉट एबल टू सेव वेरी गुड विजन। सो ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे जो 1000 ग्राम से कम हैं, उनमें कम से कम 1 महीने की एज पे एक बार चेकअप हो जाना बहुत जरूरी। So the incidence of threshold ROP और जहाँ पे हमें उसके ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी वो 35 to 36 weeks है, which is called a stage 3 और stage 2 plus. And beyond that is 4, जहाँ पे रेटिना उठना शुरू हो जाता है और वो मैकुला की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और stage 5 जिसमें पूरा का पूरा रेटिना डिटैच होता है। इनमें सर्जरीज की जा रही हैं लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और नजर जो है वो नॉर्मल नहीं होती। तो ये जो है सर्जरी के ऑपरेशंस के बाद या कई बार जो हम लेट स्टेज में देखते हैं उस टाइप की कंडीशंस रेटिना की बन जाती हैं और इनमें जो है बच्चे की दोनों आंख की विजन जो है वो कम रह सकती है। So that's all what we wanted to tell you about the basics of retinal diseases. And I think furthermore it will be taken up by in the next session about anti-VEGFs and other vitreous surgeries and whatnot. So I hope I have been able to do justice with the topic, and whatever you have not been able to understand, or if you want me to translate anything, please let me. I'll just stop sharing my screen and we can all have a good discussion. Yes, sir. Thank you. Thank you so much for the wonderful session. It was indeed in detail.
especially fundus images and interpretation of OCT. कई बार काउंसलर थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि उसके सामने OCT के कई सारे प्रिंट आउट्स आते हैं, लेकिन व्हाट टू एक्सप्लेन एंड हाउ टू एक्सप्लेन विद द यूज ऑफ OCT. So it was really helpful with your session. So now I open it for question answers. So those who want to ask questions can simply raise their hands or unmute themselves and ask the question. So you can type your question in chat box. Hello, sir. Hello. Yes, ma'am. हेलो, मुझे एक बात पूछनी थी. जब कैटरेक्ट ज्यादा मैच्योर हो जाता है ना पूरा, मतलब तो उसका रेटिना पे कैसे असर होता है, एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे तो. देखिए, रेटिना पे एज सच कोई असर नहीं होता है, लेकिन हमें रेटिना दिख नहीं रहा. जब कैटरेक्ट मैच्योर हो गया तो विद ऑल ओवर मोडेलिटीज लाइक जो इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी है या स्लिट लैंप हम करते हैं, तो हमें रेटिना दिखाई नहीं देता. तो हम ये नहीं जज कर पाते कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कितना दिखाई देगा. यदि उसके पीछे कोई मैकुलर होल हो या उसके पीछे डायबिटिक रेटिनोपैथी की चेंजेस हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट. ठीक है. या उसके कोई चोट लगी है, सपोज चोट लगने के बाद कैटरेक्ट बन गया, मैच्योर हो गया. ठीक है. तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पीछे कोई रेटिनल डिटैचमेंट है या हैमरेज. तो इन कंडीशंस में आंख का अल्ट्रासाउंड यदि ऑपरेशन से पहले हो जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो रेटिना के ऊपर एज सच कैटरेक्ट का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप पेशेंट को काउंसल करोगे तो आप उतने कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते कि हम ऑपरेशन के बाद आपको 6/6 विजन जो है दे पाएंगे. यदि आपके पास कोई उसके तरीका हो जिसके साथ आप उसको पता कर सकें कि इसका पीछे का पर्दा ठीक है, आइदर विद अल्ट्रासाउंड और विद एक्यूटीमीटर, पोटेंशियल एक्यूटीमीटर और समथिंग, तो आप पेशेंट को कन्विंसिंगली कह सकेंगे कि आप कोई भी लेंस डलवा लो, वी विल बी एबल टू गेट यू 6/6. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. So there is a question about perimetry, which I think will be taken up in some other session, because perimetry is not part of the posterior segment evaluation today. Although I can tell you perimetry is basically for glaucoma. ग्लूकोमा के लिए फील्ड को असेस करने के लिए जो भी टेस्ट किया जाता है, जो साइड की नजर को टेस्ट करने का तरीका है, उसको हम पेरीमेट्री कहते हैं. मोस्टली ग्लूकोमा में साइड के विजन को इफेक्ट होता है, या जो ब्रेन की कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी साइड विजन इफेक्ट होता है. So there is another question. Who has gone for first surgery with monofocal lens and can go for multifocal? I think again this is not in the preview of posterior segment evaluation, but there are lenses available which are called piggyback lenses or secondary IOLs, which can be put on the existing intraocular lens. So वो उनमें आप उसको मल्टीफोकलिटी दे सकते हो. या यदि आपको लगता है कि टाइम थोड़ा हुआ है ऑपरेशन को और आपका सर्जन चाहता है कि एक आई में मल्टीफोकल डाला हुआ है, दूसरी में डालना चाहते हैं, तो यू कैन रिप्लेस द लेंस विद अ मल्टीफोकल. एंटी-VEGF आरओपी पेशेंट्स में दिया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशंस में ही दिया जाता है. सभी कंडीशन, सिर्फ स्टेज 1 जोन 1 डिजीज में एंटी-VEGF दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद भी यूजुअली लेजर की जरूरत पड़ जाती है. So this is what I was saying. If one eye has multifocal, the other eye has unifocal, we can always put a piggyback lens or a secondary, another secondary PCIOL in those conditions, what is called a sulcoflex lens. Or
otherwise the patient will have to use glasses. So silicone lenses, I don't know if people use silicone lenses these days. There used to be silicone intraocular lenses before. So those silicone intraocular lenses will go and get affected when we put silicone oil in the eye. So that is why most of the surgeons, they recommend acrylic lens to be put in the eye. So यदि सिलिकॉन लेंस डला है तो वो हेजी हो जाए या वो सिलिकॉन ऑयल के टच करने से खराब हो सकता है. So if there is a acrylic lens or a PMMA lens, that रेटिना कैटरेक्ट सर्जरी के बाद सभी कंडीशंस में डिटैच नहीं होता है, लेकिन पीवीडी का इंसिडेंस कैटरेक्ट सर्जरी के बाद काफी कॉमन है. सो पीवीडी के साथ रेटिना डिटैच हो सकता है if there is any break or something, and that is why it is very important that we do a thorough retinal examination or a posterior segment evaluation before going ahead with cataract surgery. So that will help and that will save you in these kind of situations where after cataract surgeries or after few days of cataract surgery, the patient lands up with retinal detachment and implicates you or cataract surgery to the retinal detachment. So that situation can be avoided if you have done a thorough clinical retinal examination and told the patient that retina is fine. So that means you definitely know that it has come only after the cataract surgery, mostly with PVD. Any other questions, please? Any questions from the audience? Sujit Kumar Mishra wanted to know something. Sujit, are you there? Please Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You want So to know? know some end of story, sir. Sorry? End of related. हाँ बताइए आप. एंडोफ्थेल्माइटिस की बात कर रहे हैं. Oh. Hello. हाँ जी सुजित सुन रहे हैं हम. Sir, you give me some idea of endophthalmitis, sir. एंडोफ्थेल्माइटिस का मतलब बेसिकली है कि जो इंटरनल टिश्यूज ऑफ द आई है, जैसे विट्रियस है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया. जी सर. Inside of the eye has inflammation, what is called endophthalmitis. Okay. So that can be because of cataract, that can be because of any surgery, post-surgical हो सकता है, post-trauma हो सकता है, और otherwise हो सकता है. Okay, sir. So that's also part of posterior segment, of course. When the vitreous gel, ये जो gel है, ये hazy हो जाता है because of inflammation. Okay, okay. Commonly, तो endophthalmitis initially we treat with injections, and if it does not get cured with injections, then of course we can do a vitreous surgery to remove that gel. How to identify endophthalmitis, sir? So first of all, clinical examination, you will be able to see, maybe you will be able to see some hypopyon in the anterior chamber. Okay. The posterior segment will become hazy. There'll be exudates in the vitreous. And if you are not able to evaluate the retina, then you may do a scan ultrasound. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. So as I told you, it can occur after cataract surgery or any other intraocular surgery, after injury, after cataract surgery, glaucoma surgery, or sometimes it can even occur because of some systemic disease, जिसको endogenous endophthalmitis कहते हैं. जैसे कुछ लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, या कोई लोग हैं जो कि कुछ जिनकी इम्यूनिटी कम है,
Okay, तो sir. उनमें जो ब्लड स्ट्रीम की इन्फेक्शन है, ब्लड की इन्फेक्शन कैन ट्रेवल इनटू द आई एंड कॉल लीड ऑन टू एंडोजीनस एनेस्थीसिया. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, well. We have a question from Ms. Swati Mehra in chat box. If you can answer that, sir. Is there any difference in the prognosis if retinal disease occurs before or after cataract surgery? So, I think, if I'm not mistaken, Swati is trying to ask me about diabetic retinopathy, and it has a bearing on cataract surgery. Because यदि diabetic retinopathy cataract surgery से पहले है, तो उसको diabetic retinopathy को पहले treat करना चाहिए. Because diabetic retinopathy tends to increase after cataract surgery, either with injection or with laser. But sometimes the cataract is so dense that you are not able to treat the diabetic retinopathy or any other disease of similar to that. So you may just give an injection and do cataract surgery and later on take up the retinal pathology. So is there any difference in prognosis if retinal disease occurs before or after cataract surgery? So prognosis will also be guarded, because if you are saying retinal detachment occurs after cataract surgery, then of course, if we are able to fix it properly and in time, we may be able to get back the full amount of vision which we expect after cataract. लेट हो गया और वो रेटिना सेटल नहीं हुआ, तो उतना विजन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता. सिमिलरली, यदि रेटिना में स्कार है या मैकुलर होल है, तो नेचुरली even after cataract surgery the prognosis will not be very good. As you all know, what we are doing in cataract surgery is we are just removing this lens. ये जो लेंस है, जो यहाँ जोन्यूल्स के साथ लगा हुआ है, we are just removing this lens. Okay, so we are removing an obstruction from the path of the rays of light which are going inside here. So if the retina is not normal, the vision will not be proper. So if I just say, give you a very crude example के जैसे आँख है, तो it works like a camera. कैमरा में एक लेंस होता है, एक फिल्म होती है. तो यदि फिल्म ठीक नहीं है, तो यदि हम लेंस को चेंज भी कर दें, तो भी जो इमेज है वो सही नहीं बनेगी. So this is something like that. So if the retina is not normal, the image of the whatever object you have outside will not be proper. So even after cataract surgery, the vision will depend on the health of the central retina or macula. And of course, the scar cannot be removed with injections. यदि कुछ स्कार ऐसा है जिसमें हमें लगता है कि सर्जरी के साथ उस स्कार को रिमूव करके सेंट्रल एरिया को क्लियर किया जा सकता है, then surgery might help. But anti-VEGF injections are only for जहाँ पे हमें लगता है कि VEGF release हो रहा है, just like in diabetic retinopathy, in vascular diseases like vein occlusions, or where there are new vessel formations like ARMD. Anti-VEGF injections is not a panacea for each and every retinal disease. ये नहीं है कि आप कोई भी बीमारी आएगी तो आप कहोगे भी हमारे डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा. Anti-VEGF is only for those particular diseases where there is a leakage, there is a hemorrhage. स्कार को आप एंटी-VEGF इंजेक्शंस लगा के नहीं ठीक कर सकते. So retina surgery, of course, I think if you have worked with eye setups, you all know
रेटिना सर्जरी एक तो ये है कि लॉन्ग सर्जरी है, थोड़ी डिफिकल्ट टू लर्न सर्जरी है, और सेटअप भी बड़ा चाहिए, माइक्रोस्कोप भी बड़ा चाहिए, मशीन भी चाहिए, लेजर भी चाहिए, क्रायो भी चाहिए, फिर उसके साथ आपको एक अच्छी असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है, और उसके बाद पेशेंट की अटेंशन या पेशेंट की कोऑपरेशन भी उतनी ही चाहिए होती है। बिकॉज हम आपको कह रहे हैं कि गैस डाली है या सिलिकॉन ऑयल डाला है, विच इज बेसिकली लाइटर देन वाटर एंड इट विल रेज अप। सो यदि वो पेशेंट उल्टा नहीं लेट पा रहा, ठीक है, तो इट विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट दैट, टेम्पोनेट दैट रेटिना, so the retina surgery will fail. So if you have left some break which is not yet closed, or if you have left some traction or which is not yet relieved, the surgery may fail. So सबसे बड़ी complication जो retina surgery की है, in addition to endophthalmitis हो सकता है या कुछ और, कि failure of retina surgery. The first surgery may not be successful. और दूसरी जो चीज है कि जब रेटिना डिटैच्ड रहता है तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं PVR और प्रोलिफरेटिव विट्रियो रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव विट्रियो रेटिनोपैथी में जो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सो देन इवन आफ्टर 2 or 3 or 4 surgeries the retina may not settle, and once it goes to that stage, we sometimes say कि हमने इसमें ऑयल डाल दिया, अब हम ऑयल को निकालेंगे नहीं, जितनी विजन है उसको उतनी पे रहने दीजिए, because beyond that even if you keep doing surgeries you will not help the patient, and of course उस स्टेज में even blindness भी हो सकती है. So complications of a retina surgery, how bad it can be. Can a person go blind if the surgery or injection or laser go bad? So there are a lot of variables in retina surgery. Surgeon's competence, surgeon's setup, and patient cooperation. And most importantly, patient's luck and surgeon's luck. Because as I always say, and you might have seen it written in so many doctors' clinics, I treat, he cures. So we, in spite of doing our best efforts, we may not be able to achieve 100% results. So cataract surgery से पहले OCT scan जरूरी है. If you are able to see the retina, और आपको देखने में पूरा लग रहा है कि ठीक है, then you may not do OCT scan. पर आजकल जैसे हम प्रीमियम लेंस करते हैं, जिसमें जैसे मल्टीफोकल डाल रहे हैं या कोई टॉरिक लेंस डाल रहे हैं, जिसमें पेशेंट बिल्कुल 6/6 विजन चाहता है और दैट टू विदाउट ग्लासेस, देन वी जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग. उन कंडीशंस में हम पहले पेशेंट को एक OCT स्कैन कर लेना जरूरी समझते हैं. कुछ क्लिनिक्स में प्री ऑपरेटिवली जैसे इंट्राकुलर लेंस पावर की जाती है, ऐसे ही OCT स्कैन और पेंटाकैम और स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी भी की जाती है. सो जस्ट लाइक यदि आप रेटिना नहीं देख पा रहे तो आप एक अल्ट्रासाउंड करते हो, ऐसे ही टू मेक श्योर दैट रेटिना इज फाइन यू विल नीड OCT स्कैन. और कई बार क्या होता है कि आपको यदि कोई डाउट लग रहा है तो बिफोर द ऑपरेशन यू वांट टू डॉक्यूमेंट के पीछे सब ठीक है, तो भी हम OCT स्कैन पेशेंट का कर लेते हैं. And sometimes even if the patient is not willing to pay, we do it without payment, because that will help us, save us later on. हमें जब यदि कोई उसके ऊपर कोई लीगल इम्प्लीकेशंस आती हैं, कोई पेशेंट हमें बाद में कहता है कि हमारी नज़र क्यों नहीं बनी, तो उसमें हम ये चीज़ उनको बता सकते हैं कि जी देखिए हमने पहले भी स्कैन किया था जो कि अबनॉर्मल था. सो कहाँ पे हम गैस डालेंगे, कहाँ पे हम ऑयल डालेंगे,
ये चीज नॉर्मली डिसाइड होता है कि यदि, तो देखिए आप इतना तो समझ रहे हैं कि गैस और ऑयल दोनों चीजें जो हैं वो पानी से हल्की हैं और वो ऊपर उठेंगी, और जब हम उनको पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए कहेंगे तो वो रेटिना को पुश करके रखेंगी, दैट इज इट विल टेम्पोनेट द रेटिना, टेम्पोनेट द सरफेस। बट व्हाट हैपेंस विद गैस, एंड स्पेशली कि जो SF6 गैस है वो थोड़ा टाइम रहती है, C3F8 उससे थोड़ा ज्यादा टाइम रहती है, लेकिन सिलिकॉन ऑयल एक ऐसी चीज है जो जितनी देर अंदर है वो उसका बबल छोटा नहीं होगा। सो इफ यू हैव अ सिंगल ब्रेक इन द सुपीरियर क्वाड्रेंट्स, ऊपर वाले पार्ट ऑफ द रेटिना में सिंगल ब्रेक है या एक ही क्वाड्रेंट में ब्रेक्स, तो वी टेंड टू पुट गैस विच विल गो ऑफ इट्स ओन, अपने आप खत्म हो जाएगी 15-20 दिन में, महीने में। लेकिन यदि नीचे का रेटिना है, इंफीरियर ब्रेक है, जहां पे के गैस का बबल जल्दी ही अपना इफेक्ट खत्म छोड़ जाएगा, वहां पे वी नीड टू पुट ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, बिकॉज सिलिकॉन ऑयल विल रिमेन इन द आई टिल दैट टाइम वी डोंट रिमूव इट। जब हम उसको निकालेंगे तभी वो उसका इफेक्ट खत्म होगा। गैस का इफेक्ट जब बबल 50% रह जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। And the other part is if you are not sure that you have sealed all the breaks, यदि आपको ये लगता है कि कोई ब्रेक छूट ना गई हो और या आपको ऑपरेशन के बाद कोई लेजर करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऑयल डालते हैं, क्योंकि सिलिकॉन ऑयल के थ्रू आप रेटिना की लेजर कर सकते हैं, गैस के थ्रू रेटिना की लेजर नहीं की जा सकती। So these are the few situations where you use gas or oil. And normally हमारे पास 2 या 3 तरह की गैसेस अवेलेबल हैं, एक SF6 होती है, एक C3F8 होती है, एक C2F6 होती है। The most of the surgeons they use either SF6 which is a little short acting, 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है, और C3F8 जो है takes about a month। बट SF6 के साथ एक चीज बहुत जरूरी है पेशेंट को समझानी और काउंसल करनी, कि जो SF6 गैस है या फॉर दैट मैटर कोई भी गैस है, वो जब आप बाई एयर फ्लाई करोगे तो वो एक्सपैंड हो जाती है और उसके कारण इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है। सो जो पेशेंट के अंदर गैस डाली है उस पेशेंट को बाई एयर ट्रेवल करना मना करना पड़ता है। सो समटाइम्स जो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो दूसरे कंट्री से आए हैं या बाई एयर ट्रेवल करके अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनमें यू माइट हैव टू पुट ऑयल जस्ट फॉर दिस रीजन। If silicone oil seeps to the anterior chamber, would a resurgery help? How complicated would it be? If the silicone oil comes into the anterior chamber में silicone oil आ जाता है, तो वो कॉर्निया के सेल्स को डैमेज कर सकता है। लेकिन जब हम सिलिकॉन ऑयल निकालते हैं, क्योंकि वो लाइटर देन वाटर है, ऊपर को उठता है, तो इट विल ऑल कम आउट। Either you can remove it from the limbus, just like जैसे हम फेको के टाइप पे छोटा सा वुंड बनाते हैं लिम्बस में, ऐसे ही हम सिलिकॉन ऑयल इंटीरियर चैम्बर से निकाल सकते हैं। लेकिन जब यदि वो ज्यादा टाइम पड़ा रहे, if silicone oil remains in the eye for long time, it will damage the cornea, and then when the silicone oil starts to emulsify, it will block the trabecular meshwork and lead to scanty glaucoma. So anterior chamber में जब ऑयल आता है तो हमें ऑयल निकालने का प्रोसीजर जो है उसको ज़्यादा महत्व देना पड़ता है, और उसको जितना भी टाइम हमें पर्दे को जोड़ने के लिए उसको रखना है उसके बाद उसको निकाल देना जरूरी है। और ऑफ कोर्स यदि कॉर्निया डैमेज हो जाएगा या सेकेंडरी ग्लूकोमा हो जाएगा तो उसको नज़र पे इफेक्ट पड़ेगा, विजन विल बी नॉट दैट गुड। कैन ग्रीन लेजर एंड इंट्राविट्रेल इंजेक्शन be done together on the same eye? Usually injections and lasers are not done on the same day. लेकिन आज इंजेक्शन लगा के कल लेजर किया जा सकता है, आज लेजर करके कल इंजेक्शन किया जा सकता
And most of the times, especially in diabetic retinopathy, जहाँ पे मैकुलर एडिमा भी है और साथ में प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी भी है, वहाँ पे दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। और पहले हम इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद हम लेजर शुरू कर देते हैं, 1, 2, 3 सेटिंग्स की जा सकती है। एंटी-VEGF इंजेक्शंस आरओपी में मैंने पहले भी बताया कि वो यूज की जा सकते हैं, बट वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही यूज किए जाते हैं जहाँ पे लेजर करने की पॉसिबिलिटी कम होती है, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी अभी भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो निक्कू से बाहर नहीं लेके जाया जा सकता, या उसकी डिजीज इतने सेंटर में है जहाँ पे लेजर नहीं की जा सकती। नॉर्मली एंटी-VEGF इंजेक्शंस इसलिए कम दिए जाते हैं क्योंकि एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाने के बाद भी हमें लेजर करने की जरूरत है। Any type of gas help in corneal endothelial defect after intraocular surgery trauma? सिर्फ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन डिटैचमेंट, और डेस्मेट्स डिटैचमेंट की कंडीशन में हम गैस डालते हैं। डेस्मेट्स को फिक्स करने के लिए वी कैन यूज अ गैस इनटू द इंटीरियर चैम्बर। हम एयर भी डाल सकते हैं, लेकिन एयर एक दिन में खत्म हो जाएगी। So if you want that gas to have its effect for a longer time, say for a week, you can put C3F8 or SF6. Although the damage to the endothelium may be a little more. So that's, I think, very nice and interactive part, which I always like, because more the questions, more we feel that the people have at least understood what we are saying, and they are curious to know more. So that gives the satisfaction of being a speaker. Yes, sir. Yes, sir. It was a wonderful and very informative session. And I think it provoked a lot of questions. We got a lot of questions from audience. I had few questions, but then, because of time constraint, I think they were more related. We can take up shortly, very quickly. No, they were more related to the counseling part of it. So we can take it during the advancements in eye care of posterior segment. If you have some short questions, I can always answer that. No, I mean, the whole purpose was making them equipped with the clinical and technical knowledge, which I think you have done it wonderfully, and a lot of new things to learn, and I'm sure everybody is really happy with today's session. So even after this, if anybody has got any question, you can simply mail it to the Ophthall team, and we'll try to get your answers to these questions from sir, directly to you or to the group. So thank you so much, Dr. Garg, for this session again, and thank you all for joining in, and I hope it was a very helpful session for you all too. So next week, Saturday, we are going to have advancements in eye care, anterior segment, and the next Sunday we will have advancements in eye care, posterior segment. So stay tuned. From my side also, I would like to thank Ophthall Group for taking this initiative and helping our staff and our counselors also to learn more about ophthalmology. And these programs are really helping the practitioners. And I think Counselling sir is doing a great service by doing this. Thank you, doctor. Thank you so much, doctor. So can we share this PPT to the participants, doctor? Yes, sure. I can send you a mail of this. Okay. Okay. Probably send it to in the group or whatever you want. Okay. Yeah, I'll send a mail to the same mail from where I got the mail. info@Ophthall.in. Yeah. Sure, we'll do that. Okay. Thank you so much, doctor. Thank you, sir. Thank you. Right, Thank sir. you, So Pratik, For yes, sir. participating We'll and- end this session. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. everybody for participating and inciting a good discussion. Thank you. Thank you, sir. Good night to you all. We'll wind up this meeting. Sure. Good night, sir. Thank you. Good night.